Vasudev Panda. Welcome to Master of English. The class Ethics and Values, class number 17, 17 number class. तो आम पाखापाखि शेष पर्यायर पहुँची सारी पिले. आई थिंक सो आसंता काली कंप्लीट हम चैप्टर बही पूरा कंप्लीट हम एथिक्स एंड वैल्यूज आसंता काली कंप्लीट हम तापर आम देखा जदि हुए ईवीएस क्लास आम स्टार्ट करवा नेक्स्ट पर्यायर नहेले आउ कौन पढ़ा एथिक्स एंड वैल्यूज सेकेंड सेमिस्टर क्लास भी स्टार्ट करवा. तो आज क्लास रे आम पढ़ुचे जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. प्रथम जिनस प्रथम पर्यायर जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन माने लिंग को आक्षेप कला भाया जमती पुरुष किंबा स्त्री को आक्षेप कला भाया भाषा हैं एंड कम्युनिकेशन बा एभलिया किछि एथिक्स एंड वैल्यूज नॉर्मली 25 मार्क्स 25 मार्क प्रत्येक सेमिस्टर में पढ़िबा पिले. सो लैंग्वेज इज मैन मेड. आम समस्त जानिथिबा लैंग्वेज इज मैन मेड. भाषा मनुष्य तैयारी बा मनुष्यकृत. भाषा होछि मनुष्यकृत. लैंग्वेज इज मैन मेड and it is a means of expression. यहाँ निज को व्यक्त करिवार एक माध्यम. It is a means of expression. It reflects our thinking process and it reflects our thinking process. मनुष्यर भावना को व्यक्त करिवार माध्यम होछि भाषा. Our judgments and the capability competence of individuals to whom they are applied and our judgment. What do we think about other people? What do we tell about them is the judgment that we think about other people. आम अन्य लोकर विषय रे जहाँ चिंता करू आउ ताकु जहाँ कहू सेटा ही भाषा रे पिले. Simply put, language is an expression of the way we value some people. Language is the way of expression that on that way we value people. लोक को जेति की गुरुत्व दो ता प्रति आमे सेही भलिया भाषा प्रयोग करिथाउ. So very often our language is gender biased. Very often प्राय सबु बेले our language is gender biased. लिंग को आक्षेप कला भलिया भाषा आमे कहिथाउ समस्ते. So the language we use in everyday life, दैनंदिन जीवन रे व्यवहार करथबा समस्त भाषा, the language we use in everyday life, what happens in our popular culture is loaded with such bias. ए भलिया conflict माने सिचुएशन रे आमे अछे कि हमर भाषा स्वतः प्रवृत्त भाव रे जनकर लिंग को माने से पुरुष किंबा स्त्री ताको आक्षेप कला भलिया भाषा हम पार्टी रु बाहरिता है. Even our text, school curriculum and literary classics are not free of these. And not only ourselves, केवल आमे नुह, even if our curriculum, literary classics are not free from these. आम बही सबू, even if आम साहित्य को जदि जीवा, आम साहित्य रे भी ए भलिया भाषार व्यवहार आमे देखिबा को पाइबा. Sometimes social groups use language as a tool to assert and maintain their dominance over others. Social groups, समाज रे जो गोष्ठी सब अछंती दल सब अछंती से माने अन्य को आक्षेप कला भलिया भाषा सब व्यवहार करिथांते कोन पई टू शो देयर डोमिनेंस ओवर अदर्स. निजर आधिपत्य देखैबा पई टू शो देयर डोमिनेंस. It reflects the superiority of one group and the inferiority of another group. And from this, it is very clear that those people who are commenting on other people, they want to exactly show their superiority. से माने तांकर superiority बा प्राधान्यता देखेबा पई चाहुथांते नहीं बिले. And gender group also suffer from this linguistic dominance and differentiation. And all gender groups suffer from this. समस्ते यार चापरे प्रभावित होइथांते. So a close look at the language we use on a regular basis shows how it differentiates between men and women. And if you look carefully at the language that's being used by us, आमे जो सब भाषा व्यवहार करूचे, we will find that we use a particular language for men and a particular language for women. Our language is also not same for the men and women. स्त्री एवं पुरुषों प्रति महिला एवं झील मान प्रति समस्त आमर भाषा समान न थाए. Congratulations सुनीता. Then boys and girls, basis shows boys and girls in a 2011 study. 2011 रे गोटे स्टडी हेतिला
In a 2011 study, it has been noted that countries with gendered language experience higher average gender equality. And in a study being undertaken in 2011, it shows clearly that the language where gender equality is not maintained, these gender based languages are frequently used. ସେଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ. And in 2019 2019 ମସିହାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ହେଇଥିଲା. In 2019 study reveals that using gender neutral pronouns increases positively attitude towards women. They help in reducing the prominence of male identity and subsequently in generating less gender based bias. So 2019 study रे यह clear ହେଇଥିଲା ଯେ पिले when we use gender neutral language माने जेंडर को बेस कला भलिया कथा जेतोळे हम व्यवहार करूने से जगह रे वुमेन मानकर पोटेंशियल बढ़ी जाए से समाज रे स्थिरता कंस्टेंसी देखा दिए. That's why we must avoid gender neutral language. Our language mustn't be sexist language, you can say, sex based language. So what is gender language? Then question arises spontaneously, what is gender language? How do we use in our everyday life? नहीं ये प्रश्न उत्तर जो देखियो हमें. Some words is used in our daily interaction and conversation project male dominance, while some words and sentence express attitudes undermining women. If we will examine the words that are being used by us in day-to-day conversation, we'll find that interaction and conversation are interaction and conversation. आमर जो कथावार्ता होचे भावर आदान प्रदान करूचे आमे समस्ते, it projects male dominance. सब बेले पुरुषर प्रधानता देखई थाए दर्शाई थाए male dominance प्रूव करी थाए. While some words एभली किसी शब्द भी आमे व्यवहार करि थाउ, some words and sentences express attitudes undermining women. आउ किछि शब्द सब बेले स्त्री मानकु तळकु नेला भलिया शब्द आम पाटिरु बाहरी थाए. And these exemplify respect for one group and disrespect for the other and are called gender language. And from those instances that we have discussed now, getting me? From these instances it is very clear that it shows respect for one group and disrespect for other. एथरे कोन हुए पुरुष मानक सम्मान मिलुथिबा बेले स्त्री मानकर सम्मान हानि ही थाए. And this is called gender based language or gendered language. So the language used to undermine and belittle women is offensive in nature, and whatever language we are using, if that language is hurting someone else, or if the language that's being used by us is hurting a woman particularly, then this is called women offensive. This language is offensive for women in nature. Such offensive language is called sexist language, and such offensive language that is being heard by women, and by hearing that if they felt irritated, then this type of language mustn't be used by men in society. So next, what is there? Then another thing is there. What is sexist language then? Use of words or language can also have sexual connotation. Sexual connotation, kamo uttejaka, kamo bhavana, pradipaka, etc. Sexism in language manifests itself when language devalues members of a certain gender, and sexist language in many instances promotes superiority and arbitrariness of the males, humiliates women. When sexist language being used as a comment, you can say, you might have seen lots of videos are getting viral nowadays where boys and girls, boys are commenting girls, even if males are commenting women, etc. This is what such that language that is unbearable or unhearable, you can say. This type of language mustn't be used kariba katha no, but still some groups, some peoples are there, they are using. And this type of sexist language mustn't be used in our society. It is not only bad for ourselves, it is also bad for society, bad for our country, but bad for the community where we are living. It creates a wrong biological image of women, and by using such type of language, it creates a wrong biological image of women.
स्त्री मानकर जो जैविकता अच्छी जैव विविधता अच्छी यार खराब प्रभाव पड़े एफेक्ट्स देयर कॉन्शियसनेस तांकर जो सचेतन मन अच्छी से सचेतन मन उपर यार प्रभाव पड़े एंड इरोड्स द फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ इन वुमेन निज उपर भरोसा उठी जाए जे मु समाज रे बुली पारिबी फ्रिक्वेंटली समाज को मोर भी किसी अवदान अच्छे समाज प्रति मोर भी किसी कर्तव्य अच्छी यही भावनाटा स्त्री मानक मनरू धीरे धीरे अपसरी जाए जितेबाला यही भाया भाषा से माने समाज रे शुणती women are being humiliated in the lyrics and depiction through the use of sexist language and in our literature in our songs that are being sung by us even if you have seen you have heard you might have heard yes or no such type of language are being used that is hard to listen that is painful to listen when we listen such type of language even we can't sit with our mother or sister such type of scenes are being created in film also so such type of scene mustn't be there such type of song mustn't be sung there that what the feeling of a particular person जो जिनस जन को माने शुणिले खराब लगे ये भाया गीत भी बाहर कथा नुह ये कथा भी आम हवा कथा नुह तापर ताहले को भाया कथा हवा कथा जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज ताहले जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज कौन व्हाट इज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूजिंग प्रॉपर लैंग्वेज इज ए मैटर ऑफ अवेयरनेस एंड इंडिविजुअल कंसेंस कहले विवेक मनुष्यर विवेक ही मनुष्य को प्रवर्तित थाए ठीक भाषा व्यवहार करने तमें जदि जड़े विवेकवान व्यक्ति निश्चित भाव तुम जो भाषा व्यवहार कर निश्चित भाव भल ही होइथिबो we need not use words which demean subjugate or offend people with whom we interact and we mustn't use this type of language that hurts a man women directly or indirectly जदि कौन सी भी भाषार प्रयोग जनक पाई माने खराब लगुच जन को से भाया भाषा आम व्यवहार करने कथा नुह So both boys and girls, men and women should develop the courage of conscience to resist such use of words and everybody should be aware while they are using such type of words they must be aware that by using such type of language somebody is being hurt जे जनक को भल लगुनि से जिनस कहला परे से भाया भाषा व्यवहार करने कथा नुह we need to use language that conveys respect for each other and we must select our language आम निश्चित भाव आम भाषा को माने विवेक सहित ताकू बाछवा दरकार यही भाया भाषा व्यवहार करने दरकार कि से भाषाटा कहार क्षति न करू कहार असम्मान न करू दिस विल क्रिएट ए मोर टॉलरेंट एंड इक्वल सोसाइटी एंड बाय यूजिंग सच टाइप ऑफ लैंग्वेज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज दैट इज वी कैन क्रिएट व्हाट ए मोर टॉलरेंट एंड इक्वल सोसाइटी गोटे समाज रे साम्यता आम रक्षा करि परिबा making language gender free or avoiding the use of sexist language is termed verbal sanitation so making language gender free जदि भाषा रे आमे लिंगगत संयमता रखिबा avoiding the use of sexist language खराब भाषा व्यवहार करिबा नाही this is called verbal sanitation or filtration of language that is called जमती पानी को आम फिल्टर करके मैला सफा करुचे से भाया दैट इज कॉल्ड वर्बल वाटर सैनिटेशन एटा हूँ वर्बल सैनिटेशन आम कथा कहबार संयमता रक्षा करवा एज वी नीड टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट जमती आम परिवेश को क्लीन रखा दरकार वी आल्सो नीड टू क्लीन आवर वोकाबुलारी निश्चित भाव आम भाषा भी सफा हवा दरकार परिष्कार हवा दरकार सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट यूजिंग ए लैंग्वेज व्हिच इज जेंडर न्यूट्रल इदर देन जेंडर्ड तो जेंडर लैंग्वेज व्यवहार करने परिवर्ते जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज आम व्यवहार करने कथा जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज और जेंडर इनक्लूसिव लैंग्वेज इज द लैंग्वेज दैट अवॉइड्स बायस टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर सेक्स ग्रुप सो जेंडर व्हाट इज जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज देन जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज इज नथिंग बट इट इज द लैंग्वेज दैट अवॉइड्स बायस टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर सेक्स ग्रुप जितेबाला कौन एक कम्युनिटी वा ग्रुप को आक्षेप न करके आम कथा होचे दैट इज कॉल्ड जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज Many words that incorporate the word men, such as man-made, mankind, manpower, which we have discussed earlier, are perfectly acceptable gender-neutral alternatives. For example, artificial or synthetic humankind or workforce. तो आमे जेमती कहूचे man-made, mankind, manpower. ए जगह ये सब वर्ड जितेबाला व्यवहार करूचे आमे ए जगह तामाने कोण होचे man-made ताले वुमेन कोण तयारी करू नांते mankind women kind काहे कि होउनी
These are what sexist word. This type of word, this type of words are raising normally. This type of words are called gender-based language, especially. So instead of those words, we can use artificial, man-made जगह हम artificial कही परिबा, synthetic कही परिबा, humankind कही, mankind जगह humankind कही परिबा, workforce कही परिबा, mainstream जोटा कहते हैं workforce कही परिबा. So such type of words can be replaced very easily if we can choose our vocabulary. फाइनाली लास्ट शेष पर्यायर लिटरेचर साहित्य मीडिया पॉपुलर कल्चर कॉमन यूसेज नीड टू बी स्क्रीन एंड स्कैन बाय द क्रिएटर एंड यूजर्स. तो प्रत्येक जगार जमती लिटरेचर है साहित्य है मीडिया है जो माध्यम सब रही कम्युनिकेशन मीडिया सब रही पॉपुलर कल्चर आम जो संस्कृति रही कॉमन यूसेज साधारण व्यवहार जो आम करुचे नीड टू बी स्क्रीन एंड स्कैन बाय द क्रिएटर्स एंड यूजर्स. जो मैंने यूज करुँचे से द्वारा ये जिनस लैंग्वेज फिल्टर होगी आसवा दरकार. गर्ल्स एंड वुमेन नीड टू रिजेक्ट वर्ड्स लैंग्वेज एंड गर्ल्स एंड वुमेन whoever are listening for them also there is a suggestion they must reject such type of language whenever they are coming they are confronting such type of words being used by men they must reject strongly. से निश्चित भाव रिजेक्ट करवा दे तुम्हें भाया कथा मो सहित हवा कथा नुह. who are you to talk like this to me? But our girls they are not so you can say से बड़ा डिजेक्ट करी पारना with they find disrespectful and demeaning. तो पिले आसंता काली शेष क्लास शेष क्लास रे वुमेन एंड प्रॉपर्टी राइट्स पढ़िबा तापरे एथिक्स एंड वैल्यूज फोर्थ सेमिस्टर पिला मानकर पाठ सरीबो. See you there. Stay tuned, Master of English. Bye bye.